नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। दरअसल आज हम स्टूडियो से बाहर निकल कर आए हैं इंडिया फिनटेक फोरम में। इंडिया फिनटेक फोरम एक एनुअल इवेंट हर साल दरअसल आयोजित करता है और इस बार यहाँ पर 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने भाग लिया। इंडिया फिनटेक फोरम का मकसद यही है कि देश में हो रहे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर इनोवेशन को और प्रोत्साहन मिले और लाइमलाइट दिया जाए। इस साल की थीम थी डिजिटल लिटरेसी फॉर ऑल और इसी थीम के मद्देनजर पहली दफा देश में एक फिनटेक ओलंपियाड भी आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा कॉलेजेस ने भाग लिया। किस तरह का पार्टिसिपेशन था, किस तरह के आइडियाज निकल कर आए, उसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे लीडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया फिनटेक फोरम ने पहली बार फिनटेक ओलंपियाड का आयोजन किया। इसमें एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ज़ीरोधा, कैश रिच जैसे इंडस्ट्री लीडर्स ने पार्टनर के तौर पर जुड़ गए थे। मकसद रहा देश के अलग अलग हिस्सों से फाइनेंशियल सेक्टर के लिए टैलेंट तलाशना। देश में बढ़ते डिजिटल पेमेंट के दौर में फेक और फ्रॉड के झांसे में लोग ना फंसे, इस उद्देश्य से फिनटेक ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बड़ी थीम फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल फ्लुएंसी रही। Fintech Olympiad is trying to A, create a good quality content and B, also create the motivation. तो कंटेंट जो है वो अच्छे कंपनीज दे रहे हैं, हमारे पार्टनर एक्सिस म्यूचुअल फंड भी दे रहे हैं, ज़ीरोधा दे रहे हैं। तो ये सारे कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट, वो हमारे वेबसाइट में रहता है एज अ सिलेबस फॉर द स्टूडेंट्स। और ये सिलेबस पढ़ के उनका डिफरेंट राउंड्स ऑफ टेस्ट होता है। ये जो क्विज एंड जो एंटायर फॉर्मेट है, ये उनको इंसेंटिव देने के लिए है कि क्यों वो फाइनेंशियल चीज़ें को पढ़े, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड डिजिटली लिटरेट। ये हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। फिनटेक ओलंपियाड में 2000 से ज्यादा कॉलेजेस ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मकसद युवाओं में मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ, लोन, इंश्योरेंस, फाइबर फ्रॉड जैसे सभी पहलुओं की समझ बढ़ाना रहा। इस फोरम का उद्देश्य ये भी रहा कि नई पीढ़ी अगर क्रेडिट और फाइनेंस के मुद्दे की बारीकियां कम उम्र में सीख ले, तो यही पीढ़ी आगे चलकर देश के फिनटेक इकोसिस्टम में नए बिजनेस मॉडल और नई आइडियाज पर काम कर सके। अभी कॉलेज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना पहला जॉब करूँ एंड आई एम प्लानिंग टू लाइक फॉर I'll do job for 3-4 years and after that I'm planning to build my own startup. तो यहाँ पे जो connections बनाए हैं, hopefully they will help me a lot आगे चलकर। I learned about a company that is managing ESOP. हमको पहले सोचा ही नहीं था ऐसा opportunity था fintech में। So these niche opportunities we got to learn and we might even go on to build something on our own in the future. तो मैं कहूँगा जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है एंड देन मुझे कनेक्ट करने को मिला यहाँ पे। एंड राउंड्स वर मैं MBA फाइनेंस हूँ तो मुझे कंपेरेटिवली इजी थे मेरे लिए, बट स्टिल इट शोज़ कि नॉलेज के बिना यहाँ पे काम नहीं चलेगा। सो या इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ गुड एक्सपीरियंस। इस ओलंपियाड में पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में 75 स्टूडेंट्स ने क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिया और हर कैटेगरी से 3-3 विनर्स चुने गए। रियलिटी शोज के जमाने में इस तरह के टैलेंट हंट शोज के माध्यम से भारत को ग्लोबल मैप पर फाइनेंशियली मजबूत बनाने की इंडिया फिनटेक फोरम की कोशिश वाकई सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदमों में से एक है। कल्पिता पारकर, मुंबई। इंडिया फिनटेक फोरम में एक बड़ा मुद्दा था कि भारतीय यूनिकॉर्न्स का क्या स्टेटस है, खास तौर से वो कंपनियां जो फिनटेक के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आंकड़े अगर देखें, भारत नंबर 3 की रैंकिंग पर है फिनटेक यूनिकॉर्न्स के मामले में। लेकिन हाँ, पिछले साल सिर्फ एक ही यूनिकॉर्न उभर कर आया है देश में और वो फिनटेक क्षेत्र से नहीं था। तो फंडिंग को लेकर एनवायरनमेंट कैसा है? क्या अभी भी माहौल में थोड़ा सा डर है? फिनटेक में किस तरह के इनोवेशंस आएंगे जो इन्वेस्टर्स को और प्रोत्साहित करेंगे यहाँ पर निवेश करने के लिए? इन्हीं सब मुद्दों पर मैंने देश के आला इन्वेस्टर्स से बात की। जब मुझे मौका मिला कि आकर इस बहुत ही ऑगस्ट ऑडियंस से बात करने के लिए और बहुत ही शानदार पैनल से बात करने के लिए कि यहाँ से अब आगे यूनिकॉर्न्स की स्थिति क्या है, तो मुझे लगा ये तो एक मौका है जो मिस नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तो भारत का इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 111 यूनिकॉर्न्स हैं, जहाँ पर
21-22 में हमने देखा लगातार वो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही थी यूनिकॉर्न के नंबर में, लेकिन 2023 में ऐसा नहीं हुआ। उसके अलग कारण है, हमने काफ़ी इंपोर्टेड मंदी देख ली, भारत में लोग बहुत नर्वस हो गए थे, सब लोग कह रहे थे कि ये फंडिंग विंटर है, लोग पैसा नहीं रेस कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आप इस समय देखें, फिनटेक्स की अगर बात करें तो $4 बिलियन जो फंड रेस हुआ था पिछले साल, वो सिर्फ $1.5 बिलियन, नियरली $1.4 बिलियन तक ही सीमित रहा। So why has that funding halved to begin with? विक्रम जी बताइए, what is your assessment? Is it primarily a macro कारणों की वजह से कि अमेरिका में मंदी का डर, और उसके बाद we've seen what's happening with Israel and Palestine in the Gaza Strip, वो सारी चीजें मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर असर डाल रही हैं? हर्षा जी, that should not matter because Technically it shouldn't, but the numbers say it. the numbers are saying it also. जैसे आप जब खाना चालू करते हैं शुरू में आप अच्छे से खाते हैं, एंड में थोड़ा कम खाते हैं, so we are digesting, we are at the end of a technology cycle first of all. दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो मार्केट की जो मल्टीपल्स है, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन मल्टीपल्स, वो काफ़ी श्रिंक हो गई। जो 2 साल पहले 40 गुना ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीपल था, वो शायद अभी 8 हो गया। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ओवर वैल्यूड हैं लेट स्टेज में, अब वो आगे जा रही है पैसे उठाने के लिए, तो उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो इन्वेस्टर वो कह रहे हैं वैल्यूएशन घटाओ, तो ये उनके बीच में ये थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं। सीड लेवल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, थोड़ी वैल्यूएशन घटी है, बट आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल एनवायरनमेंट टू स्टार्ट अ कंपनी एंड एन इक्वली गुड एनवायरनमेंट टू सीड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ विनर्स। तो दिक्कत जो भी आई है वो ऑफ कोर्स लेट स्टेज कंपनियां, और जो कंपनियां आगे प्लान कर रही थी कि अब हम आईपीओ के लिए जाएंगे या फिर एक और बड़ा राउंड लेंगे, वहां पर है। विक्रम गुप्ता, आपकी असेसमेंट क्या है? पैसों की कमी है या फिर लोग बस थोड़े कॉशियस हैं? In fact, there is a lot of dry powder sitting right now in the system. So people have stayed away from investing for various reasons. 2022, we saw the interest rates in the US went up substantially high in a very short period of time. Therefore, liquidity crunch happened, and that led to what happened in SVB, and Indian startup ecosystem has 85% dollar capital and 15% rupee capital. So obviously anything that happens in the US impacts the Indian startup ecosystem. So that put a lot of brakes 2022 onwards in terms of the funds wanting to deploy, because there was this kind of a thing about, then in my view, markets are now coming back in terms of VCs wanting to deploy capital. We ourselves have raised about 2,000 crores in our Fund 3, all domestic capital. We've deployed 450 crores in the last 12 months. And we will deploy probably another 1,500 crores in the next 18 to 24 months. We are quite excited and bullish about what's happening in the market. I think there has been a substantial increase in the maturity levels of the founders, and also the valuations have come to realistic levels. I will say realistic levels. So I think that's where there's good opportunity. मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पर यही कहा गया था कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस था। तो उसके बाद क्या ये एक बहुत बड़ा करेक्शन फेज है या फिर एक रियलिटी चेक है? आप इस एनवायरनमेंट को कैसे देखते हैं? So I think it's more a reality check, because when markets corrected, expectations and the late stage fintechs, they saw a correction that happened in terms of valuation, and they were pretty okay with rounds which were either flat rounds, and some went ahead and raised money even down rounds. But that correction was not visible even in terms of expectation when it came to early stage founders. So early stage founders were still of the view that we should get a similar valuations that we were getting back then in 2022. There is no correction that essentially happened in the early stage founders. But over the last 3-4 months, conversations and the expectations have come down. At least now there is an openness that we see in terms of asking a more reasonable valuation or talking a more reasonable valuations. So the last 4 months have been actually pretty good, because there is a reality check that these guys have also had, that we'll probably not get at early stages a similar valuation that we were getting in 2022, which were just up because, the larger guys were raising so much amount of money, and if your product was doing well, you thought, okay, my product should have this much value at the beginning.
But yeah, now there is an expectation which has mellowed down. However, there's still a gap. It's not that, there's whatever is corrected in the late stages, it has trickled down to early stages. There's still a gap that we see, but more reasonable now. और ये जो करेक्शन देखने को मिला है शशांक या फिर रियलिटी चेक, how has it impacted the health of the ecosystem? Are we looking at more vibrant companies coming out after this phase? We run and operate an early stage fund, which is investing as the first institutional check. Now, with our 140 plus portfolio companies in 4 years, our mission is still the same, to our ability to deploy in 100 companies a year. हम लोग वही target chase कर रहे हैं. So, we fundamentally believe that this is here to stay. I would like to interject over here with pointing out to the audience that India is sitting on a 1.4 billion population, the most deeply penetrated, digitally connected ecosystem, and the valuations are by far the lowest across the world, with a lot of capital coming into India, right? So, आप कोई भी mathematics लगा लो उसके अंदर, India is still the next best lucrative market for the next 10 years, right? With that assumption, we are going ahead and aggressively deploying, and we've seen 10 to 15% of our portfolio go to Series A. हमारे चेक के बाद प्री सीरीज आता है, नॉमेनक्लेचर ऐसा ही, मतलब थर्ड स्टेज पे वो जा पा रहे हैं, फोर्थ स्टेज हमारे हिसाब से सीरीज भी रहेगी जहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, एंड वी आर सीइंग 10 to 15% of our portfolio companies now, which is, I believe, a decent number, and I fundamentally believe that the next 10 years is here to stay. So we are very, very bullish. Vikram, because you've raised funds recently and you've also started deploying them. In the last 6 months, कितना आपने फिनटेक कंपनियों में पैसा डाला है? तो हमारे पोर्टफोलियो में 4 कंपनीज हैं अभी जो फिनटेक कंपनीज हैं. रिसेंटली हमने एक कंपनी है ग्रेड राइट जिसमें हमने पैसा डाला है. दे प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, so for higher education. Then we have companies like Lendbox, FinPay, which is our common company, and also FT Cash. Okay. So ये हमारी कंपनीज में हमने पैसा डाला है. हमने सपोर्ट भी किया है इन कंपनीज को. सीरीज ए के बाद वी हैव फर्दर सपोर्टेड दिस कंपनीज इन द लास्ट. इनमें से कोई ऐसा कम वैल्यूएशन पर हुआ है या फिर उनके वैल्यूएशंस जस के तस हैं? वैल्यूएशंस जो हैं थोड़ी रियलिस्टिक हुई हैं वैल्यूएशन डेफिनेटली. एंड जहाँ पे भी हम फॉलो ऑन करते हैं, जब एक्सटर्नल इन्वेस्टर आता है तो दे सेट द वैल्यूएशन, एंड बट there has been cases where we have done rounds, follow-ons as a discount to the next round. So in your own portfolio, you are supporting companies. You don't want to necessarily put a valuation number because you would rather benchmark it against the next round, and especially in this market, it's very hard. Your baby is always good. You would always want to value it the maximum, but because it's a little bit of tricky situation, so you always do it as a discount to the next round. In the last this 450 crores that we deployed, I would say that we've seen at least 30% corrections from 2021. So 30 to 40% corrections. Perhaps it is what the market also demands. Vikram Chachra, आपने भी, मैं इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो देख रही थी. You're absolutely bullish on fintech, aren't you? पर किस तरह के नए आइडियाज अब यहाँ से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेंगी, चाहे वो अर्ली स्टेज में हो, सीड स्टेज में हो या फिर लेटर स्टेज में हो? किस तरह की पाइपलाइन बिल्ड होगी जो अगला यूनिकॉर्न क्रिएट करेगी बेसिकली? I think that's a great question. And if you really think about it, the way fintech is growing is very much aligned with what the government wants, right? I remember 15 years ago, I had a meeting with other investors. I met the governor of RBI. And he said, my biggest problem is how do we increase banking penetration? Only 1 out of 2 Indians had a bank account. So no matter what they were trying, the banking penetration was not increasing. So the government rolled out Aadhaar, right? They opened a bank account. And the government said, if you open a bank account, we will give you Narega in that, right? Next thing, we gave them digital payments. So we started with digital identity, digital payments. And as we were discussing before, we want to now make sure that every single Indian is eligible for credit, right? So if you think about it, 800 million या 80 करोड़ इंडियन के पास बैंक अकाउंट है, 2.5 बिलियन अकाउंट्स, 250 करोड़.
जिसमें से 180 मिलियन इंडियंस, 18 करोड़ इंडियंस को कभी क्रेडिट मिला है फॉर्मली। तो ये 600 मिलियन को क्यों नहीं मिल रहा है? ये एक चिकन और एग प्रॉब्लम है। अगर आपके पास क्रेडिट फाइल नहीं है तो आपको कोई लोन ही नहीं देगा। अभी आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू द ऑडियंस। यू ऑल हैव योर बैंकिंग हिस्ट्री, transaction history. Who do you think owns that data? She says, it's me. Under the new Data Protection Act, we own it. We own it, yeah. So what has happened now with the technology that is going out now, the new framework, account aggregator framework, with a single click, you can transfer your entire banking history to a potential lender or an insurer. What that means fundamentally, कि 800 million लोग अपनी बैंकिंग हिस्ट्री किसी को दे करके अपने को लोन ले सकते हैं। ये हमारी इनकम दिखेगी। तो ये जो क्रेडिट ब्यूरो वाली प्रॉब्लम ये खत्म होने वाली है। अगले 10 साल में आप देखोगे इंडिया में जो क्रेडिट ऑन यूपीआई आने वाला है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। पिछले साल हमने 35 करोड़ स्मॉल लोन दिए हैं, जिसमें से 2/3 वर गिवन बाय फिनटेक्स। हमारे हिसाब से हर साल, हर महीने 5 साल के अंदर नहीं भी तो 100 करोड़ लोन जाएंगे। तो वी आर नाउ अप्रोचिंग अ न्यू पैराडाइम इन लेंडिंग, राइट, वेयर एवरीबडी गेट्स एलिजिबल, everybody gets credit, right? Small businesses get credit, and therefore economy does well. I'm very excited, and that's where we are investing. तो सालों से जो लोग कहते हैं ना, you should build for the next billion. This is the next billion that fintechs will be addressing. मैं कब ऐसी स्थिति में फिर IIFL का जो फंड है वो किस तरह की कंपनियों को largely back कर रहा है? क्योंकि even in fintech, you know, there's a variety of opportunities. But what is IIFL bullish on? So, you know, we have been bullish on this India story, and like he rightly said that, you know, credit becoming, credit going to everyone that doesn't has access to credit, and that changing. So we have now, till now, also invested and supported companies that are enabling this ecosystem. We very early on supported an account aggregator. We invested in FinView. We invested in a company called Finbox, again, which was basically building an API layer to enable finance on various platforms. We invested in a company called Legality, which was again basically digitizing the entire document signing process. So while we have been looking at players that can enable the ecosystem, that are ecosystem enablers, largely because we think lending is not per se very easy, right? So to identify fintechs that can lend and make a business model out of lending at scale, it's a little difficult, right? Because it's tricky. Lending is about identifying the right person, and more than that, also having the collection capabilities. So today you see most of the fintechs or tech companies saying, you know, we're going to monetize basis lending, but none of them have been able to prove it at scale, right? Even the larger ones have not been able to prove it at scale. So from our standpoint, we look at more enablers, whether they are, you know, enabling a process efficiency in it, whether they are enabling the leads, whether they are enabling the ecosystem by giving their APIs. Those are players that we are more bullish on from our standpoint. Shashank, the fact that Mihika ne bola ki, you know, lending is not really easy, and we've seen that in the history of banking as well. But एक और फिर यहाँ पर मुद्दा उठता है कि ये सारी जो कंपनियां आई हैं, क्या ये वही कस्टमर को चेस कर रही हैं, इसीलिए ये स्केल नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए वो लेंडिंग इतना आसान नहीं हुआ है? क्या वो सिचुएशन है या फिर इट्स समथिंग एल्स? No, I think so. There are two ways of looking at it. First, you know, when we've backed a lot of lending technology companies, exactly what Vikram was addressing, that is the next growth avenue. But उसके अंदर क्या होता है? एक होती है lending companies which are doing off NBFCs, और एक होता है genuine technology बना रहे हैं. So if you're the latter part, that's where the disruption, I believe. We have a very large consumer base, and there's enough space, enough opportunity, because we've not even touched the surface, right? 10 players aayenge, let them fight it out, let them sell, and 2 will survive. Even then you have enough space, right? There is no reason for us not to pull up our sleeves or stop working because you're already somebody. I don't think so. That's the thing. Because if you really do the cross analysis, there are so many funds, investors, as Vikram also mentioned, domestic capital बहुत ज़्यादा है. This is all experimental money for the first time in India, right? There is no reason for founders not to experiment, not to build. So no, I think there is no confusion from consumer standpoint. बहुत type के customer persona उभर रहे हैं, and there's enough and more opportunity. Basically, market saturate नहीं हुआ है, जो बीच में डर लग रहा था, especially जब इस तरह का दौर आता है कि, you know, people are not getting the money that perhaps they desired, that the market is saturating. वैसी situation नहीं है.
to that, when you talk to your companies, Vikram Chacha and Vikram Gupta, I'd like you gentlemen to add on this. What are you advising? Because I remember the founder of Razorpay saying the earlier you be very diligent with your paperwork and the model, it is better than becoming a mid-sized company and a large-scale company, and then the regulator telling you that you can't do 80% of the things that you were doing in the past. What is it that fintechs that are sitting here or planning to develop and scale should be wary of in this environment where the market is immense, but you have to be very careful on how you scale? I think the the fundamental issue is be very capital efficient. I think there was this wave of somehow growth at any cost, just grow at any cost. And I think that mindset has completely changed. We've seen a substantial change now. The founders are becoming very, very conscious of the burn, the profitability, and they're just not going after anything and everything. And I think they are being very, very focused in what they're doing. So this is very fundamental to any business and any team. Ki whatever you are doing, make sure at the end of the day there is a profitability attached to it. Your edge is in the product. इसका मतलब कि let the banks do the long-term lending. You can focus on the very short term. The loan sizes are reducing. The loan tenures are reducing. Right? So if you think about the fastest growing segment is small loans. जो 25,000 रुपए का लोन होता है 3 महीने का होता है, हम कह रहे हैं वो 250 रुपए का लोन हो जाएगा और वो आप 2.5 दिन में लौटा दोगे. मैं तो कह रहा हूँ आपको 2.5 घंटे का भी लोन मिलेगा. Because sometimes you don't have money for 6 hours. You are a cab driver. You wake up in the morning. आप गैस स्टेशन में गए, आपके पास पैसे ही नहीं है. आपको उसी टाइम में पैसे चाहिए और आप दोपहर तक उसको लौटा सकते हो ऑटो डेबिट करके. तो ये सारी टेक्नोलॉजी अभी आ गई है. So we are going into an era of instant credit, instant repayment, instant underwriting. We are looking at instant India, and that is going to start with fintech. Okay. And can I get a quick, instant 30-second responses from both of you on that? Due diligence in what are you advising your companies, portfolio companies at this point in time? I'll be very candid. Our objective is to invest in those companies which have the ability to A, create stickiness, and B, raise money from institutional investors. After investing, I think creating the discipline of, governance, having that mindset, and how your core product is going to grow in compliance to whatever is happening in the ecosystem, particularly in fintech, is very, very important. Hence, when we look at any fintech company, we are evaluating, spending enough time in figuring out, are they hopefully not treading into something which RBI is not clear on. So those are the things which we look at, and I think that will remain for the foreseeable future. Yeah, so on similar lines, we have been, while evaluating, we're very careful of what the regulatory landscape is. And we keep advising our investee companies that, you have to be very careful when it comes to RBI, the governance, the laws which are coming in. And we keep doing these checks with them where, we check whether all the compliances are being met or not. We also ensure that there is a capital efficient model that they are building, right? So to a lot of our investee companies and the new companies that we engage with or we're advising them on, we say, if RBI is not in favor of a particular model, don't try to find ways to do it, right? So what has happened over the last... Stick to the rule book. Stick to the rule books. On that note, thank you very much. Bahut shukriya. It's been great speaking to all of you. Thank you very much.